Good evening, everyone. I'm audible. Please Good confirm. evening. Yes. You're audible. Okay. Okay. So let me introduce myself. My name is Ankur Vashne, and I'm your data science trainer. If you join your trainings here in Learnomate Technologies, so I will be your trainer for the data science and data analytics. Right. So as you have suggested that, okay, you will be that have some session about the Power BI. But before going to the Power BI, we should have some little concept about the data analysis and the data science. So let us discuss first this, and then we will move to the different module of data science and data analytics. And then we will understand later that how we can do the data analysis using Power BI, Excel, right, and the Python. Right. So first tell me, are you guys all of you are comfortable in Hindi, or you guys some have you one of you have that problem in English? Hindi. Okay. हिंदी में सबको कंफर्टेबल है, राइट? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको हिंदी में दिक्कत हो? ओके, सो हिंदी में स्टार्ट करते हैं. सो पहले मैं शेयर कर दूं स्क्रीन. Okay, English is better, Supriya. Okay. Okay, let's do in English. Okay. So first is data analysis. That we have to understand first, right? So can anyone tell me what is data analysis? Any one of you can tell me? Data analysis होता क्या है? What is data analysis? It's very trending in the market. Data analysis, data science. So you must have some idea about the data analysis. You can unmute yourself and then tell me. Don't chat. Don't write in the chat. Unmute yourself and then tell me. Hi, Ankur. As far as I know, data analysis like हमें डेटा कोई भी हमारे पास जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसमें से जो इंफॉर्मेशन होती है जैसे लाइक चार्ट की फॉर्म में या फिर कुछ इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं. Right, right, right. Somehow बट it's correct. So data analysis is what? Analysis on the data, right? We are या doing the analysis on the data. On which data? The previous data or the future data? Can you clear it that? previous data, so it can be help Previous. for the company's growth. Right, right, right. So you all know about this company growth and all. So, okay. But some of you might didn't know about this, that what is data, why we are using previous data and how it can help in the company progress or the profit of the product. So I have some examples and I will clear it all these things with the help of these examples, right? So I think you are all doing the graduation, right? You are on the final year, students, right? So tell me, if tomorrow is your exam, right? Tomorrow is your exam, and I will say that, okay, let me guess what will happen in tomorrow exam, and I am predicting that, okay, you will be fail in tomorrow exam, right? So can I do this? Can I predict this anyhow? क्या मैं गेस कर सकता हूं या कोई प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कल आपके एग्जाम में क्या होने वाला है? यू विल बी फेल और पास? सर जो आज की सिचुएशन होगी हमारी उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. लाइक अगर हमने कोई स्टडी नहीं किया देन यू कैन प्रेडिक्ट कि हाँ एग्जाम आपका क्लियर ही नहीं होगा. Sorry, can you come again?
एक्चुअली सर आई सेड कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो हमारी आज की सिचुएशन के हिसाब से, कि जैसे अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप लोग मतलब क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम, ये आज की सिचुएशन के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। वॉइस इको हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू। वॉइस इको क्यों कर रहा है? जस्ट अ सेकेंड। किसमें? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वॉइस भी मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, एक बार फिर से बताएंगे आप? सर मैंने कहा कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो हमारी आज की सिचुएशन के हिसाब से, राइट। कि सो अगर आपको व्हाट विल पता बी है द कि हमने सिचुएशन? कोई स्टडी नहीं कर रखी, अगर आपको पता है कि मतलब हमने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखा है या फिर हम स्टडी ही नहीं कर रहे पूरा पूरा दिन, तो राइट। आप ऐसे बता सकते हो कि मतलब हाँ आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम की। राइट। एक तो ये हुआ कि आपने देख के बता दिया, राइट, यू हैव सीन दिस माय परफॉर्मेंस डे बाय डे एंड यू कैन प्रिडिक्ट, ओके, यू आर नॉट स्टडिंग एंड यू आर नॉट डूइंग गुड, so you will be fail on the next exam, right? Now the what is the second thing? Second thing, on the basis of your marks and all whatever you have secured in the last 6 months or the last year, right? Whatever you are studying for the exams, what you have in marks in your sessional exams or in the internal exams, on the basis of that also I can predict, right? Although it will be not the 100% accuracy that, okay, if I'm predicting on the basis of the previous exam that, okay, you will be fail, but it can happen, right? It can be happen because suddenly you have something in your mind and you have done a tremendous job last 2 days and you have studied a lot and you have cleared your exam. So that can be the situation, but it can happen anywhere, right? So accuracy can be your 98% or 90%, 99% of your prediction. Getting my point? So on the basis of your data, previous data, we can easily predict your future. Getting my point, everyone? Yes, clear. Yes. Right. So that is why data is very important, right? Whenever you're dealing with data, whenever you are going for any analysis, future prediction, and the current prediction also. So data is very important. The previous data is very important. So that is why we do all the analysis on the previous data. So let me give you one more example. Suppose you are in a company, right? Suppose no, not in a company. You are at home and you are ill, right? What you will do? You will go to the doctor, right? You will go to the doctor, right? Then tell me what will happen on the first step when you reach to the doctor. He will ask for our health, what happened, like symptoms. Yeah, that is diagnosis, right? Yes, sure. He will go for the diagnosis, right? And what will the next हिंदी में step? बताओ सर, Sorry, हिंदी में कंफर्टेबल। हिंदी इनकम्फर्टेबल पे आप लोग? ओके, सम ऑफ वन सेड ओके सर प्लीज आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैं मिक्स करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, द फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोसिस। वो आपको क्या करता है? डायग्नोस करता है। आप उसको कुछ बताते हो अपने बारे में और वो अपने टेम्परेचर थर्मामीटर से कहो, स्टेथोस्कोप से कहो, या फिर अपनी एनालिसिस से वो आपको क्या करता है? डायग्नोस करता है, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट ही विल डू। Yes. नाउ what is the Yes. second step? Can anyone tell me? मोस्टली डॉक्टर दवाई भी देते हैं और काफी मतलब टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट लिख देते हैं कि टेस्ट करा लीजिए अपना, देन रिपोर्ट के बेसिस पे फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं मतलब। Yeah, that is common diagnosis, right? First step is diagnosis, means on the basis of report. Suppose कभी कभी स्टार्टिंग में किसी चीज को डायग्नोस करना मुश्किल होता है, तो वो सीधे क्या करता है? पहले कहता है आप ये रिपोर्ट करा के लाओ, देन वी विल डिस्कस। यस और नो? यस सर, देन यू विल राइट। तो टेक क्या होता है कि ट्रीटमेंट। सबसे पहले डायग्नोसिस ही होता है, राइट? सो सेकंड स्टेप क्या होता है? ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स। सर जो भी हमने उनको सिम्टम्स बताया है ना, वो एनालिसिस करते हैं उस सारी चीजों का और उसके हिसाब से फिर हमें मेडिसिन देते हैं। Medicine is the last step, right? So second step is prognosis.
Can anyone tell me what is prognosis? Anyone? No idea about it. No idea. Okay, so prognosis में क्या होता है? Prognosis में he threaten you, okay, कि आपको ये बीमारी है, right? And ये हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ, right? You will have the cancer, you will have a heart attack, right? So he will kind of threat you, right, with the different situations, right? Okay, if you not take the treatment, you will have this heart attack situation in the future. Your there is blockage in your nerves, right? And different arteries blockage is there. So all the possibilities related to your diagnosis, he will give you all these situations. Yes or no? वो आपको सारी तरह की सिचुएशन देता है, डराता है कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर आप मेरी बात में नहीं सुनोगे। बात आपको बाद में बताएगा कि क्या करना है, राइट? प्रिस्क्रिप्शन बाद में देगा, पहले ही बताएगा कि अगर नहीं करोगे तो ये चीज हो सकती है, राइट और रॉन्ग? राइट, Yes, it's right. राइट। सो दिस इज प्रोग्नोसिस, राइट? ही विल गिव यू द फ्यूचर प्रेडिक्शंस, राइट? इन फ्यूचर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड देन द लास्ट स्टेप, what he will do, he will give you some prescription, right? And in prescription he will tell you, okay, अगर ये दवाई खाओगे तो इससे हार्ट अटैक नहीं होगा, ये दवाई खाओगे तो इससे किडनी फेल नहीं होगी, ये खाओगे तो ये नहीं होगा, right? So he will give you some prescriptions. Yes or no? Yes, right. Right. So these analysis also, how we are doing these analysis. What is that? Start waiting. वो ऑलरेडी Right. स्टडी कर चुका है ट्रेनिंग डॉक्टर की. Right. So everything is based on your data. You can understand everything in your life, everything, right? If your mother is also saying na ki you will not do, someday you will achieve something, so he might thinking about some your good work that you are doing currently. If you are not doing that, he will give you a honest suggestion. वो आपको बिल्कुल सही suggestion देंगे, okay, तुम्हारे काम ऐसे नहीं है, तुम नहीं बन पाओगे, right? That's comes with our parents or not? These come kind of that arguments, right? Yes. Everyone has faced this. So these all things are coming with the help of the previous data only. Yes or no? So that is why we have to do the analysis for each perspective, whether it is your personal studies, if you are talking about personal studies, you are talking about your professional things that you are doing. अगर आप किसी कंपनी में, राइट? अब मैं कंपनी का एग्जांपल लेके चलता हूँ. टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपनी व्हिच इज प्रोडक्ट बेस्ड, राइट? नाउ you have a different products, like suppose करो एक मेरे पास मोबाइल कंपनी है, राइट? मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता हूँ या मैं अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूँ, राइट? इन फ्यूचर आई हैव टू इंक्रीज माय प्रॉफिट. So what I will do, I will hire a data analyst and ask him to do the analysis of the previous data. Yes or no? Right? That I will do. Yes. Yes. Right? Just a second. Right. So what I will do, I will hire a data analyst to do the analysis of our previous data. Now suppose we have different products, right? Different mobiles, which mobile 1, mobile 2, mobile 3, mobile 4, mobile 5, mobile 6, right? Suppose we have different years data also, 2020, 2021, 2023, right? Different years data we have. And if we see that, okay, year by years we are having good profit and we are increasing the profit. Sorry, just right? We are increasing the profit as we are increasing the
As we increasing the year, we are increasing the profit, right? So he will ask me, okay, what I will do, what different thing I do in my products or something like that, so that I can increase my product, that profit, right? So as you can see, you have the limited products that you are manufacturing. Everything is constant now. What you can do in that case? Can anyone tell me? If you have this kind of situation, there is a mobile company and he is doing making some products, mobile products, and then he is having some profit yearly and he is increasing, right? But at some time, after some time, it is constant, right? And or whatever you can say, it is decreasing. After that, you have this analysis. So what you will suggest, how you will do the analysis? कोई बता सकता है कैसे हम एनालिसिस करेंगे ऐसी सिचुएशन में? If you have this kind of situation, 2021 में आपकी अच्छी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 22 में आपने प्रॉफिट ज्यादा मेंटेन किया, 2023 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, राइट? नाउ यू आर कंसर्न बिकॉज अगले साल और भी कम हो सकता है. So you hire a data analyst and ask him, tell me how I can achieve a good profit. Tell me. Can anyone tell me how we can do this? See, I can tell you the process, right? That, okay, we do the data analysis, how we can make the charts, how we can make the analysis with different codes and all. But this kind of thing that I cannot tell you कि आपको सोचना कैसे है. Getting a point? You have input features. आपके पास different input features हैं, RAM है, आपका memory है, आपका कैमरा है, different features है. ये सारे inputs हैं आपके पास, right? और output में क्या है आपके पास? उसका price, right? So this kind of data you have. Different model है, उनके input features हैं. Sir, we can also analyze with the help of price. मतलब हम प्राइस के अनुसार भी देख सकते हैं कि कौन से मॉडल के ज्यादा प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है, या फिर उनके फीचर्स भी चेक कर सकते हैं. राइट, गुड अप्रोच. हम ऐसा भी सर्च कर सकते हैं कि हम दूसरे कंपनी के भी जो मोबाइल्स आ रहे हैं, राइट, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारे प्राइस ज्यादा तो नहीं है, राइट? राइट, वी हैव द सेल्स एवरी ईयर, कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, राइट? सो वी विल गो फॉर द इनपुट फीचर्स. यस और नो? हम लोग इनपुट फीचर्स पे जाएंगे, देखेंगे क्या क्वांटिटी घट रही है ईयर बाय ईयर किसी प्रोडक्ट की, और किसी प्रोडक्ट की क्या बढ़ रही है, राइट? तो दिस इज दिस व्हाट वी कैन डू. सो अगर क्वांटिटी हमें पता चलती तो उससे हम कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं? कोई बता सकता है? जरा वो राजू कर. हाँ जी, कोई बता सकता है कि किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं? चलो, हमें ये पता चल गया कि भाई ये दूसरी कंपनी में इसका प्राइस ज्यादा है और कम है, और मेरी कंपनी में ज्यादा है, राइट? सपोज मोबाइल वन है, इसका एक्स कंपनी में ज्यादा है कम है प्राइस, और हमारी कंपनी जो है, राइट, सपोज लर्नोमेट के पास जो मोबाइल है उसका प्राइस ज्यादा है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मैच दिस नंबर. Yes or no? Yes. Right, I can match this one. This is the first condition that you can do. Good approach. Another condition, another situation, another thing that what you can do improve in that case. That is the one thing. You can if you have, suppose there is no margin, right? Margin बहुत कम है, आपने कम भी कर दिया, right? Because you have, suppose, good company camera, right? Suppose another company is using local camera, you are using good camera, everything is good, so there is no margin, very less margin is there. So what else you can do? Tell me. अगर ऐसी कोई रीजन भी देख सकते हैं ना कि किस रीजन में हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या फिर किस रीजन में कम प्रॉफिट हुआ है. जैसे किस रीजन, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? लाइक आई थिंक कहना चाह रही हैं बिहार में बंदे शायद मेरे ख्याल से कॉस्टली फोन ज्यादा कम लेते हैं. लाइक दिल्ली एंड एनसीआर एंड मुंबई रीजन मोस्टली प्रेफर बंदे एप्पल फोन यूज करते हैं, जस्ट लाइक. तो अकॉर्डिंग टू एरिया, लाइक गाँव में काफी मतलब फोनों को थोड़ा ज्यादा कॉस्टली वो परचेज कर नहीं पाते, तो हमें ऐसे नहीं, फोन. देखो, अब आजकल क्या है, सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई कंपेयर करता है, ठीक है? अब Yes. एक्चुअली क्या है कि
आपके पास दो चीजें, एक तो आपको ब्रांड को बनाना है, ब्रांड बनाओगे तो आपको क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, राइट। सो आपके पास दो तरह के लोग हैं, एक है अर्बन एरियाज, एक है आपका रूरल एरियाज, राइट। सो दोनों में क्या है कि अर्बन एरिया जानता है क्वालिटी क्या है, व्हाट इज क्वालिटी, यू आर गेटिंग गुड लेंस और नॉट। गांव वाला बंदा जो है वो क्या देखता है कि आपके पास कॉस्ट क्या कम पड़ रही है, राइट। You must have the phone and with all the features. It doesn't matter that which company lenses you are using, what is the RAM and what is other features are there, right? So you have to maintain the that quality also. You cannot take local lens and all. Getting my point? Yes, yes, yes. So what else you can do? Think about it. You have, suppose you have 6 different mobiles. Yes or no? Right, and tell me how companies are making mobile. Suppose you are going to buy a phone, आप एक phone लेने जाते हो market में, right? So what you will do, you book a phone and then company started making that phone. Yes or no? Yeah. Is that happen? No, no, no. Right. Someone is saying yes, it happens. No, it's not happen. See, you have the prediction of your demand in the future, right? Suppose you have that, okay, in future, in next year demand will be like, it is also you make by the data analysis only, that how much demand will be in the next year. So you will make on that prediction, okay, if I have 1000 piece demand, yes or no, in the future, in next year, so you will make this in your factory in advance, yes or no? Yes, yes, yes. राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, आप एडवांस में बना के रखोगे, पहले से। ये नहीं कि आपके पास जब कस्टमर जा रहा है वहां पे बुक करा रहा है तो आप बना रहे हो, नहीं, आप पहले से एक ऑर्डर तैयार करके रखोगे, उतना जितना कि आपको लगता है कि यार इतना डिमांड में होगा। वो भी आप डेटा एनालिसिस के थ्रू करते हो, वो भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपकी प्रीवियस डेटा को देख के। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या होता है, अब आपके ये 6 तरह के मोबाइल है, राइट, यू हैव डिफरेंट 6 मोबाइल विद डिफरेंट फीचर्स एंड डिफरेंट प्राइस। इनमें से कुछ कोई ऐसा होगा जो बहुत अच्छा कर रहा होगा, राइट, और कोई होगा जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा होगा। यस और नो? Yes, yes. राइट। सो हमें जो लॉस होता है ना, या लॉस कह दो आप, या लेस इन प्रॉफिट बोल दो, राइट, ये केवल इस वजह से नहीं होता कि आप कितना नुकसान आपको मतलब कितना बिक रहा है या नहीं बिक रहा है उस पर, सॉरी, कितना आपको उस पर खर्च कर रहे हो। इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आपने मोबाइल सेट बनाए वो सारे के सारे बिके कि नहीं बिके। अगर वो नहीं बिके, राइट, सो दैट विल डेफिनेटली डिक्रीज योर प्रॉफिट। कोई भी ओल्ड मैन्युफैक्चर वाला फोन नहीं लेगा, राइट। whenever you are going for to buy a new product, you always see the manufacturing date, yes or no? आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हो, Yes. यस सर। सो दिस इज योर कंसर्न यार, कि मैं पुराना मोबाइल क्यों लूं, 1 साल पुराना क्यों लूंगा मैं, राइट। सो फिर क्या होता है, जब कंपनी को उस चीज को एनी हाउ बेचना ही होता है तो वो क्या करती है, प्राइस को क्या कर देती है, लेस, राइट। वो प्राइस को लेस करती है और या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे ले जाती है। तो वो क्या है, आपने बनाया तो है मगर उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इवन आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यस और नो? सो Yes. ये भी हमें, तो हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम इस एनालिसिस को देख सकते हैं कि जो मोबाइल कम है, मतलब कम डिमांड में है, उसकी हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम कर दें, और जो डिमांड में है उसको इंक्रीज कर दें। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि पता चला कि आपका मोबाइल 5 बहुत ज्यादा डिमांड में है, आपने 1000 बना लिए, राइट, और पता चला कि 1000 तो आपके फर्स्ट 6 मंथ में ही खत्म हो गए। अब आपके पास बनाने का वो नहीं है, मतलब टाइम लगेगा। और जब डिमांड होती है, जब कोई चीज डिमांड में होती है तो बायर रुकता नहीं आपके लिए, वो क्या करता है, दूसरी ब्रांड में स्विच कर जाता है। यस और नो? दे विल नेवर वेट यस फॉर द सर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, राइट। आ रहा है समझ में? तो वो हाँ क्या सर। करते हैं, आपको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि मुझे किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है और किसको कम करना है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू विद योर एग्जिस्टिंग डेटा, राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा एनालिसिस। ये समझ में आया सबको? Yes, yes. It's clear. Yes. Right, what is the need of the data analysis and how data is important, so important for us? Just a second. So I have one question. Right, yeah, tell me.
सर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट जो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अगर हमें मार्केटिंग करनी है उसी सेम प्रोडक्ट की, तो राइट। ये चीज भी हमें प्रेडिक्ट करनी है कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करनी है, या फिर उसके लिए डिजिटल मार्केटर्स होते हैं उनके पास उसके ऑलरेडी। लिए डिजिटल मार्केटर्स तो उनका एनालिसिस अलग होता है, राइट। वो ट्रैफिक के हिसाब से जनरेट करते हैं, वो उसका एक अलग एनालिसिस होता है कि कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। मान लो आप एक जगह से नहीं बेचते हो, आपके पास डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, राइट। तो हर जगह ट्रैफिक अलग है। आपने देखा होगा कि हर जगह प्राइस पॉइंट भी अलग अलग होता है, हाँ। राइट। प्राइस पॉइंट भी अलग होता है। हम्म। अगर मैं बात करूं कि मुझे अपनी वेबसाइट पे बेचना है, ठीक है, और मैं अमेजोन पे बेचूं, तो अमेजोन पे अगर मैं सेम प्राइस में बेच रहा हूं, अपनी वेबसाइट पे सेम प्राइस पे बेच रहा हूं, तो आप मुझे बताओ मुझे फायदा कहां पे ज्यादा होगा अगर मैं सेम प्राइस में बेच रहा हूं? अपनी साइट पे ज्यादा होगा सर, बिकॉज अमेजोन का अपनी ही साइड मार्जिन पे होगा ज्यादा ना। होगा। तो सही। राइट, क्योंकि अमेजोन भी अपना मार्जिन कट लेगा, ठीक है, और वो मुझे अपने मेरे एमआरपी से ज्यादा बढ़ाने भी नहीं देगा, राइट। बिकॉज अगर हाँ। मैं ये कहूं कि यार ठीक है तू अपना मार्जिन ले ले और मेरा प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर दे वहां पे, तो वो ये कहेगा फिर तो मेरे यहाँ से कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से लेगा, बिकॉज आप दूसरी डायरेक्टली भी बेच रहे हो या और ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेच रहे हो, तो वहां पे मैं लॉस में जाता हूं। मगर कभी कभी ज्यादा सेल करने के चक्कर में हम इस चीज को भी लेके चलते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी पे भी खेलते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट, एक सर्टेन अमाउंट पे, और अगर हम उसी को 400 कर सकते हैं और कम लेस प्रॉफिट पे करें, तो वो 400 मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा, कहीं गुना ज्यादा, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। तो अगर मुझे पता है कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से मेरा ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होगा और वहां से लोग ज्यादा बाय करेंगे, दैट इज मोस्ट ट्रस्टेबल, राइट। बिकॉज जब आप ई कॉमर्स पे जाते हो तो सबसे मेन चीज होती है ट्रस्ट। आंख बंद करके आप पैसा देते हो और पैसा देने के बाद आप वेट करते हो कि यार वो प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जेन्युइन ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रेफर करते हो, ये सुनो, राइट, कि अगर कुछ यस। गलत हो जाए यस। तो मनी बैक भी आ राइट। जाए, राइट। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू ऑलवेज प्रेफर दी बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। सपोज मैं नया हूं और मैंने कोई बना दी वेबसाइट और मैंने डायरेक्ट कहा कि यहाँ से लो, कोई नहीं आएगा, बिकॉज ट्रस्ट क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट, राइट। गॉट इट? यस। यस। So this is all about the data analysis. Now, can anyone tell me about the data science? What is difference between data analysis and data science, or you can say the AI? Everything we have done, we have predicted some future values. We have predicted some future, or we have predicted the future, that what can happen in the future. Tell me. हम लोग ने We फ्यूचर can, प्रेडिक्ट कर लिया है? no, we can predict some. हाँ, somehow we have predicted that okay in future ये हो सकता है, right? Yes. क्या Yeah. होगा ये प्रिडिक्ट नहीं किया अभी तक हमने, राइट। तो डेटा एनालिसिस, इफ आई टॉक अबाउट डेटा एनालिसिस, जस्ट अ सेकंड। तो डेटा एनालिसिस हमारे पास अभी तक जितना आपने किया उसमें हम क्या क्या मॉड्यूल यूज करते हैं, किस किस के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। तो फर्स्ट इज व्हाट? एक्सेल। अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सेल यूज करती हैं फॉर द डेटा एनालिसिस, राइट, बट एक्सेल इज नॉट मेंट फॉर डेटा एनालिसिस, it is meant for the mathematical calculations and everything. So for the structured data, second module is Power BI, most advanced version of business intelligence tool, right? So Power BI is the advanced version of Excel also, right? So whatever you can do in Excel, you can do in Power BI also, and whatever you cannot do in Excel, that also you can do in Power BI, right? Then third is your SQL, SQL, right? And this is business intelligence tool. This is the query language which is used for grabbing the data, grabbing the information from the database. I think you have some idea about, because I think Ankush has discussed this with your We have batch, idea. Well, right? yes. Right. So SQL is all about the business analyst, right? But we teach this module also because if anyone is going for the business analyst, so he can easily shift to the business analyst with the help of SQL knowledge.
right? And the last is your very important topic, that is Python, right? So through this also we learn the codes. So here what is happening, here we are using tools. What we are using? Tools, right? If we don't have any technical knowledge, then also we can use this and this also, because we have this code also, but these codes are very easy, right? So you can say that, okay, this query is little simple, so you can easily understand the SQL. But if you talk about the Python, so we all have these codings in Python, right? Getting my point? So very easy to understand Excel and Power BI. If you are looking, you are from non-technical background and you want to move in data analysis field, so you can easily use these two modules to switch on, right? But for Python, I will definitely tell you that you must have some basic idea about mathematics and some that analytical view. That's how you have to write the code. But it is very easy. Among all the languages of the computer, that C, C Sharp, Java, JavaScript, right? Among all these languages, Python is the easiest one, right? And those who are not from the IT background, then they can also easily understand this Python. Getting my point? So all these modules are used for the data analysis. So this is also for data analysis. This is for data analysis, but this is for business analyst. Got it? Now, when you have this idea, okay, what you have done, you have taken the data, right? Then what you will do, the next step, let me tell you the steps also that are involved. Tell me, can anyone tell me? First thing is what? Getting the data, right? You have the data. Now what you will do after this? What is the step? What will be the step? Finding insights from that data. Huh? Finding insights from the data which we have collected so far. What we have to sell, what we have to search? Data cleaning. Data cleaning, yeah. That is the very important. Data cleaning, or you can say data pre-processing. So this is the one of the most important part for the data analysis as well as for the data science. Data pre-processing, right? And let me tell you, whenever you are going for the data science project or data analysis project, so data cleaning and data pre-processing take almost 80% of time, right? So this step is very, very important. So when you go to the data, it's very raw, it's very unclean. Ranjita, can you mute yourself? Yeah. So when we are talking about this is very important, and this take almost 80% of your time to all the analysis, comparison of all the analysis, right? Suppose you are taking 1 hour, right? So that almost 40 minutes, or that will go in your data cleaning only. Getting my point? Right. Now, after that, next step is what? Useful data are separated. Yeah, that will all come in data cleaning and data pre-processing. That is why I have written the data cleaning. Data. Huh? Analyzing data. Analyzing data, right, correct. Analyzing data, right? In analyzing data, what we will do? We will find the insights, right? What data is trying to tell us. Getting my point? Just now, I have given you two examples. So what you go to the doctor and you tell your situation, what is happening from last 2 days or last 1 day or last night. Yes or no? आप जाते हो डॉक्टर के पास, आप उसे अपने हालत देते हो लास्ट के 1 दिन की, रात की, या जो भी आपके साथ हुआ होता है, right? On the basis of that data,
he will do some analysis, right? वो अपनी knowledge को use करके उसमें से कुछ insights निकालते हैं. सब चीज जो आप बताते हो सारी यूजफुल नहीं होती हैं, कुछ चीजें इलॉजिकल होती हैं, मगर आप तो अपना हालात देते हो ना कि मेरे को साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट? So on the basis of that, he will take some insights from them and do the analysis. Okay, that is happening to him. So that can be happen. That can be happen. Yes or no? Right? So you do the data analysis. You get the insights of the data, and then you will project this insights in the form of graph and charts. Sir, again repeat, sir. Sorry. That you present in the graph and charts. Yes or no? Yes. Can Yeah, anyone sir. tell me why we are making graph and charts? If we have the analysis, then why we are going for the graph and charts? ग्राफ से सर हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, हमें मतलब एक या एक डेटा को अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है उससे. Yeah, that is very easy to understand. क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं 3-4 रोज के डेटा की, तो that is very easy, you can see and analyze. But if you have 20,000 rows, if you have 50,000 rows, right? So you cannot compare and see each data and you can compare in your mind, right? Yeah. But if you have a graph for this, right? And you can see graph is going like this and this, so you can easily analyze, okay, when it is going up, when it is constant, when it is then again going for the rise, and when coming down. Right? So with the help of graph, you can easily analyze the whole data, right? Whether it is very big or very small. So that is why we represent the analysis in the form of the graph and charts. That you understood? Right? Yes, sir. And in the Yes, basis sir. of the graph and charts, we can predict, okay, in next time, what is happening, right? Just a prediction, just a roughly prediction. Okay, there in the future, it will go more down or it will go up. So for the up, what we have to do? So using those analysis, we will predict, okay, that you have to improve in this area, you have to improve in this area, and you will rise your graph again. Getting my point? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Now come to the data science. So when we include data analysis with AI, artificial intelligence, what we get? We get the data science. Getting my point? So what is data science? Data analysis plus AI, right? AI में क्या use करते हैं हम? That is machine learning and deep learning, right? Machine learning or deep learning algorithms, right? Now, what is the use of this deep learning? We have done everything. We have done every analysis, and we can that predict the future also. Okay, what will happen in the future? But we are not sure. Yes or no? We are not that much sure. Okay, in the future you will have that. Okay, and we don't have the numbers also, right? Suppose I'm talking about the profit. Now I have the, okay, we have the profit right now. This year we have the profit like 4 lakhs, right? And the next year, what will be the profit? So if I can able to give you the number like 3.5 lakhs, 4.5 lakhs, 6 lakhs, around this, and your accuracy is about 90% or 95%. So that will be good enough for the company. ये अच्छा होगा ना कंपनी के लिए, अगर आपने उसको 95% एक्यूरेट डेटा दे दिया कि नहीं आपको नेक्स्ट ईयर भी 6.5 लाख का प्रॉफिट होगा. Yes or no? Right? Yes. So there we use machine learning and deep learning algorithms to get this prediction of the number. We use different algorithms, linear regression, clustering, and many decision tree, random forest. There are lots of algorithms are there, right? So behind that algorithm is all about writing 3 lines of code in Python, right? When you apply any algorithm in a particular data, but understanding that algorithm, all the mathematics are there, mathematics and statistics are there, right? So that you have to understand so that you can easily apply a particular algorithm on a particular data. Getting my point? Yes. एल्गोरिथम लगाना बड़ी चीज नहीं है, एल्गोरिथम केवल 3 लाइन के कोड्स हैं, कोई भी लगा सकता है,
मगर उसे लगाना कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज द वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट, राइट. सो अगर आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का पता होगा कि ये कहां पे यूज होती है, ये एल्गोरिथम कहां यूज होती है, और अनदर वे क्या है कि आप सारी एल्गोरिथम यूज करो, राइट. सारी एल्गोरिथम आपने यूज करी और जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिली वो आपने कहा कि सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं सारी एल्गोरिथम लगा सकता हूं. नेक्स्ट इज व्हाट, if you are getting less accuracy in your best algorithm also, suppose we have different algorithms and in the last decision tree, or you can say in the random forest, we have achieved almost 100% accuracy, 99 or 98% accurate हो चुकी है, right, accuracy achieve हो चुकी है. एंड आपके डेटा में जब आपने लगाया तो उसके थ्रू भी आपको कितनी मिल रही है, 70%. एंड दिस इज नॉट गुड, 70% इज नॉट गुड. यू वांट टू अचीव एटलीस्ट 85. So then what you have to do, you have to change some parameters also, hyper parameter tuning, that is called hyper parameter tuning, right. So ये कैसे करोगे आप, ये तभी कर सकते हो जब आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इनसाइट्स पता होगा, उसका बैकएंड पे पता होगा कि उस पे किस तरीके से वो एल्गोरिथम, 3 लाइन की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है. गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Right. So Right. after that, when we include AI, we will get future predictions. We can do the future predictions. That you will more understand when we come to these modules and all. Then you will clearly get this clear idea about this prediction and all. Getting my point? So आप सबको समझ में आया ये what is data analysis and what is data science, why we are doing this, and what is the need this for these different companies, why they are using this, and why this is in demand, Yes, sir. right? Yes, sir. Right. So this is very, very important, and the future aspect also. So you must have some questions, right? Okay, sir. So इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा था जरूरत, right? So इतने सालों से जरूरत होता था, बट हर कोई एआई का यूज नहीं कर रहा था, राइट. ये 2002 2003 से भी स्टार्टेड है, बाहर के लोग यूज कर रहे हैं, राइट. अगर आप बात करो मिसाइल्स वगैरह में, सब में एआई का यूज होता है. जहां पे टारगेट को फॉलो कराया जाता है, सब जगह एआई का यूज होता है, हर जगह डेटा को यूज किया जाता है. तो बट क्या था कि ये यूज टू नहीं थे हम लोग, राइट. इफ वी हैव टू डू द डेटा एनालिसिस, व्हाट वी डू द आउटसोर्सिंग, right. Every company not having that data science department or data analysis department, they doing the outsourcing. But nowadays what is happening, everyone is using AI, right. So they are updating themselves, they are doing some predictions and all. So every company is having now data analysis department. So पहले क्या होता था, 2-3 कंपनीज होती थी डेटा एनालिसिस को, डेटा एनालिसिस करने वाली, उनको वो आउटसोर्स करते थे, उनके थ्रू काम कर रहे थे. अब हर कंपनी में चाहिए, राइट. सो इस वजह से अब डिमांड बढ़ गई कि हर कंपनी में डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट है, वहां पे उनको डेटा एनालिसिस चाहिए ताकि वो उनके डेटा पे काम कर सके. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज व्हाई डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आपको ये बता रहा हूं, अब जनरेटिव एआई आ चुका है, ओपन एआई आपके सामने, आपने देखा है कि ओपन एआई क्या क्या कर सकता है, राइट. जनरेटिव एआई इज द कस्टमाइज्ड वर्जन for your particular product or for your particular company, so that your data can be secured, right. So अब कैसे उसको करना है, हर कंपनी आ रही है जनरेटिव एआई पे, सबको अपना वर्जन चाहिए. तो इसकी इतनी ज्यादा डिमांड होने वाली है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो और अगर आपको डेटा एनालिसिस डेटा साइंस नहीं आता तो आपको सीखना ही पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? एटलीस्ट डेटा एनालिसिस तो सीखना पड़ेगा. डेटा साइंस इज सेकेंडरी पार्ट, एंड डेटा साइंस जितना भी आप करोगे तो उसमें एक चीज यूज होगी, दैट इज पाइथन. पाइथन इज यूज फॉर द डेटा साइंस, फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, right. Second is option is R language, but R is not very useful. If I say talk about the companies using R, that is only 4 to 5%. 95% companies are using Python, and Python is very easy. That is why I'm saying you that go for the Python. It's very easy. Okay, got it everyone? Understood? Yes, sir. Any doubts? Yes, I've completed from my side, and from tomorrow I will tell you how we can do the data analysis. First I will tell you in Excel, we will complete one project, and then I will tell you how you can do the same thing in Power BI, and what is the difference when you are doing the data analysis in Excel and whenever you are doing in Power BI, right.
So this is the roadmap, what we will do in the this week. If you have any doubt, you can ask me. Actually, I have a question. Yes. Actually, Yes. currently मैं SCL में एज अ Oracle DBA वर्क कर रहा हूँ. Okay. तो जैसे कि अब मैं कोर्स ये एनरोल होता हूँ तो इसके मेरे लिए बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब डेटा एनालिसिस के, You या can फिर easily ये switch to data science team. Suppose you are getting every year you are getting increment of 4 to 5% or 10%, right? So when you move to the data analysis team, you will get 15 to 20% every year. मुझे चेंज करना पड़ेगा. Change करना पड़ेगा, but you are already in the IT team, right? You are in Yes. IT. So suppose you have 4 to 5 experience and they are looking for a manager who can look for the data analysis team, right? So they can hire you. Because whenever I'm teaching different batches, one of many students are there, they are already working in as a manager role, right? So I asked them, okay, why you are coming for the data analysis training if you are already in the manager role? So they told me they are head of the data analysis team, but they don't have idea about data analysis. So what is happening? उनके जूनियर उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि सर ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा. तो वो बेवकूफ ना बने इसलिए वो सीख रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो मैनेजर रोल बहुत जगह ऐसा है कि जहां पे मैनेज करने का, जहां पे आपका टेक्निकल वर्क नहीं होता मगर आपको टीम कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, टाइम पे काम कराना होता है, तो वो आपको कोई बेवकूफ ना बनाए, इसलिए भी आपको सीखना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? राइट? क्योंकि अगर कोई डेटा एनालिस्ट सीख के आ रहा है वो डायरेक्ट मैनेजर तो नहीं बन सकता ना. नहीं. और जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हटा नहीं सकते. अगर वो नॉलेज आ जाए तो उसको तो वो कंटिन्यू करेंगे. So that is the situation, right? If you are having good experience in IT, you can directly go for the managerial role or the data science, right? Anyone else? ये कंसीडर नहीं होगा कि मतलब मेरा बैक एक्सपीरियंस लाइक Oracle DBA का, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस मुझे नॉलेज है. काम का मतलब नहीं होगा मगर एक्सपीरियंस काउंट होगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. काम काउंट होगा क्योंकि आप जब मैनेजर बनते हो तो बहुत सारी कंपनीज होती है जहां पे मैनेजर भी काम करते हैं टेक्निकली, राइट? दे वांट देयर टेक्निकली साउंड वेरी एक्सपर्ट. सो दैट इज अनदर थिंग. कुछ कंपनीज में क्या होता है, मैनेजर का रोल होता है केवल आपका टीम को मैनेज करना, राइट? राइट. तो वहां पे आप इजिली स्विच कर सकते हो और कुछ टाइम बाद आप टेक्निकल में भी जा सकते हो कि आप मुझे भी आता है. एक्सपीरियंस के साथ आपको हो जाएगा इजिली. ओके, थैंक यू. थैंक यू. एनीवन एल्स? सो एक्चुअली ना मतलब ऐसा है कि मेरा आईटी में एक्सपीरियंस नहीं है, बट एज अ सेल्स टीम लीडर रही हूँ मैं 2 साल तक. कोई तो दिक्कत क्या नहीं. वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं, सेल्स का काउंट नहीं होगा. ओके. मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4-5 साल के एक्सपीरियंस में, ज्यादातर ये ऐसे ही है और वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और दे आर ऑन द पैकेज ऑफ 7 lakhs 8 lakhs और 6 lakhs, लाइक ऐसे हैं. तो वो कहते हैं कि सर मैं 4 lakhs के पैकेज पे क्यों जाऊं, राइट? सो बिगेस्ट क्वेश्चन इज देयर. मगर अगर मैं बात करूं 2018-19 में फ्रेशर को भी 10 लाख 12 लाख का पैकेज मिल रहा था डेटा एनालिसिस में, राइट? बिकॉज एकदम से बूम आया था और एकदम से डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ी थी. अभी क्या है, 4 to 5 lakhs स्टार्टिंग पैकेज है. तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप 3 साल तक डेटा एनालिसिस जॉब करते हो, राइट, और आप अगर पैकेज 4 से स्टार्ट करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 से 4 साल के बाद आप 12 या 13 लाख के पैकेज पे होगे. और अभी आप अगर वो 7 से 8 लाख के पैकेज पे, आप कितना भी कर लेना, आप 12 लाख क्रॉस नहीं कर पाओगे अगले 3-4 साल में. गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes, यू आर sir. नॉट स्विचिंग योर कैरियर फॉर करंट सिचुएशन, फॉर द फ्यूचर सिचुएशंस, राइट? So you have to learn this anyhow, right now or in the future. It's choice for you. Okay, sir. हेलो. Yes. सर वो भी टाटा टाटा में टीसीएस के भी एग्जाम हुए थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? TCS के एग्जाम हुए थे अभी? हाँ, स्मार्ट हायरिंग टेस्ट हुए थे ना उसके भी. No, I'm not aware about it. Sorry. ठीक. ओके. Okay. Anyone else? जल्दी जल्दी पूछेंगे क्योंकि अभी एक और बैच स्टार्ट होने वाला है 7 बजे से. We are running out of time. Okay. No questions. I think. Yes, Rohit. Yes, sir. I think we are good. No questions? No. Okay. So thank you, class, for such a good audience. But next time I want to interact more. And if you have any question in between also, you can ask me, right? And have a nice day, or you can say a nice night. And we will meet tomorrow, definitely, with Excel. And we will do one hands-on project, data analysis project on some dummy data, right? Sure, sir.
So thank you everyone. Thank you, sir. Good night. Take care.